Good evening, guys. Today we are going to start with accounting standard 19 remaining part. Is 29. Sorry, why 29? It's a 19. So accounting standard 19. In last session we have seen leases. एक ही मिनट, ये हैंग हुआ है. 1 minute. Display हुआ. Okay, so let's start once again. So in last session we have seen accounting standard 19, that is accounting for leases. Accounting for leases we have divided in two parts: operating lease and finance lease. Operating lease is simply like rent payment, and finance lease is like hire purchase questions. Hire purchase means you have a possession and ownership is with lessor, but still asset will be recorded by the lessee. So today we are going to see some illustration based on this, and sale and leaseback is the last part which we are going to see today in today's session. So before starting today's session, is better first we will recall all accounting standard names. So number 1, disclosure of accounting policy. Number 2 is inventory valuation. Number 3, cash flow statements. Number 4, contingencies and events occurring after balance sheet date. Number 5, net profit or loss for the period, private items and changes in accounting policies. 6 number beta removed. 7 number is construction contract. 8 number removed. 9 number revenue recognition. 10 number property, plant and equipment. 11 number is effects of changes in foreign exchange rate accounting. 12 number is accounting for government grant. 13 number is accounting for investment. 14 number accounting for amalgamation. 15 is employee benefits. 16 is borrowing cost. 17 is segment reporting. 18 is related party disclosures. 19 is accounting for leases, which we are going to see today. 20 is earning per share. We already completed. 21 consolidated financial statement. 22 is accounting for taxes on income. 23 is investment in associates. Then in consolidated financial statement. 24 we already completed discontinuing operation. 25 is interim financial reporting. 26 is intangible assets, which we already completed, and today we are going to see illustrations of AS26 in the second half. 27 investment in joint venture, which is related to consolidated financial statement. 28 impairment of asset, which we are going to see tomorrow, and 29 is provision, contingent liability and contingent assets. Friends, AS19 is one of the difficult accounting standard, but today first finish your 100 pages book. Yes, you can see here your 100 pages book of AS19. Yes, what you have completed till now. See Tamanna's notebook. So she has written it very beautifully. Applicability in this standard, which is other than, we have to finish that definition part. Lease is the definition agreement between lessor and lessee, right to control the use of lease asset for a period of time for a consideration. Yes, very good. Then lease term. Lease term is beta. The lease term is a non-cancelable period for which the lessee agree to take over the asset. Okay, sir. Minimum lease payment. See, minimum lease payment. Can you tell me from the lessor's angle and lessee's angle how it is different? Yes, beta. How it is different from lessor's angle and lessee's angle? Can you tell me, beta, what is the difference between lessor angle and lessee's angle? Yes. Minimum lease payment. So what you are going to consider in lessor's point of view and lessee's point of view. Say good evening. Jaldi good evening but bol dijiye. Comment section mein. Yes. Have you joined, beta? Tomorrow we have a session in the morning. Okay. Tomorrow I'm not going to conduct the session in the evening. Tomorrow it's in the morning. And tomorrow very important accounting standard. That accounting standard previously it was in the CA final, and now we introduced it in the CA intermediate. So S28, in which we are going to see indicators, cash generating unit, corporate assets. Then what is impairment of assets? We have already covered it in the second chapter and 10th number chapter, but tomorrow we are going to see it in detail. What are the indicators of impairment, internal evidences, external evidences. So tomorrow's session, don't miss it. Or those students who have not yet registered, beta, not subscribed to our channel, तो जल्दी से आपको subscribe करना है, आपके friends लोगों में जल्दी से जल्दी circulate करना है. I am waiting for your answer. Yes, beta, how many of you can tell me what is the difference between minimum lease payment from the angle of lessee and lessor? Yes, just want to check your answer. जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. कमेंट सेक्शन में फटाफट. आज क्यों लेस अटेंडेंस है? अप टू 6:05. व्हाई यू आर नॉट ज्वाइनिंग? यस, 6:05 तक, 6:15 तक हमारे
ऑलमोस्ट 200 प्लस स्टूडेंट्स हो जाते, बट व्हाई यू आर नॉट अटेंडिंग ऑन द टाइम? आपको क्या लगता है कि प्रीवियस फर्स्ट 10 मिनट्स आर वेरी क्रूशियल? व्हाई? बिकॉज आई टेक नॉर्मली रिविजन्स इन फर्स्ट 10 मिनट्स, एंड 10 मिनट्स ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने कंपल्सरी ध्यान दे के सुनना चाहिए। सो मिनिमम लीज पेमेंट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। यस सर, गुड इवनिंग। प्लीज प्रोवाइड अस अ सेक्शन S26 का 400 पेजेस। यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू सी इट। सो रमा देवी इज आस्किंग फॉर S26 400 पेजेस का स्क्रीनशॉट्स। यस, 100 पेजेस वी ऑलरेडी कंप्लीटेड। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? बैक विद द फुल एनर्जी, इवनिंग क्लासेस, योर क्लास आर very useful and understanding. Okay, thank you sir. It's a I can't pronounce the name. It's Biol B, yes, SRO student. हाँ जी, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। यस, नमस्ते सर जी। यस, जय श्री राम बेटा। आगे कौन कौन क्या है? आई कंप्लीटेड इलस्ट्रेशन 2 सर, आई एम डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट एंड आई इजीली अंडरस्टूड सर बिकॉज ऑफ योर वैल्यूएबल टीचिंग। थैंक यू संथिगा। ऐसा तो स्टूडेंट्स आज बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे हैं। वेरी गुड। एस एस सर, प्रीवियस लेक्चर का स्क्रीनशॉट नहीं दिया था आपने S19 लीजेस का। यस, लीजेस का स्क्रीनशॉट आई थिंक मैंने दिया हुआ था। वेरी गुड इवनिंग। लेट्स सी कंसिडर्स ओनली लीज रेंटल। यस, आंसर दिया था सबसे पहले, सबसे तेज आंसर देने वाले थे, सबसे तेज आंसर फास्ट में ऋतुराज। ऋतुराज भैया सबसे तेज आंसर दिए थे। और कौन आंसर दिए हैं? और सबने बहुत अच्छे से आंसर दिया हुआ है। यस 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 यस, एवरीवन आंसर्ड इट। यस, यू आर लुकिंग ऑलवेज हैंडसम सर। मानसी गुप्ता जी, थैंक यू। देन कौन कौन क्या क्या बोल रहा है और क्या? यस, चलिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो 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 चलो, ओके सर। S19 के स्क्रीनशॉट्स नहीं दिए? क्यों नहीं दिए भाई? मैंने स्क्रीनशॉट्स देने चाहिए थे आपको। यस, आई थिंक मैंने स्क्रीनशॉट्स दिए हुए हैं आपको। नहीं दिए? ठीक है, टुडे आई विल गिव इट, डोंट वरी। सो मिनिमम लीज पेमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द लेसोर्स एंगल, व्हाट डू वी कंसीडर? लेसोर के एंगल से UGRV also, but let's see, he considers only GRV, GRV, GRV. So lease rental is common, GRV is common for all, but UGRV is not considered in the calculation of lessee, but it is considered in the calculation of lessor, and we revised it in the last session. Please, 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 those students who have not watched my previous session, first go through it, because S19 is very important. If you miss basics, you won't understand it. So previous first duty of CS students for S19, first finish my Saturday session, last session itself, and then please watch this session. Otherwise today's session you won't understand. And tomorrow I want 100% attendance, because tomorrow we are going to start with very, very difficult standard. Okay, so attendance mandatory. चलो 6-9 हो गए, अभी तक स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे। यस, when you will back after November beta? Actually I don't know, because सेशन जो है, दिव्या कुमारी, अच्छा, टुडे यू चेंज यूर स्पेक्ट्स। ओके बेटा, आज वो भी ध्यान है आपका। चलो, वेरी गुड। कितना पर्सनल ध्यान रखते हो रे बेटा। फेयर वैल्यू की डेफिनेशन थी, फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज बिटवीन द लाइबिलिटी कैन बी सेटल्ड बिटवीन द नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज एट आर्म्स लेंथ प्राइस। सर, आर्म्स लेंथ प्राइस लास्ट सेशन में हमने देखा था। फेयर वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेसिडुअल वैल्यू इज व्हाट? दैट fair value that you are going to receive it at the time of when lease asset is at the end of the lease terms, what is called as residual value. Okay, economic life हमने देखा था, and useful life of the lease asset. So two definitions. UGRV, when residual value less guaranteed value is given by the lessee, and unguaranteed value which is given by the third party to the lessor, it's called the unguaranteed residual value. Gross investment in lease we have seen in the last session. Gross investment in the lease. What is the inception of lease? Inception मतलब बेटा शुरुआत, beginning. Inception मतलब starting. Inception का meaning क्या होता है? It's a starting point. Okay, कृतिका जी, कृतिका, it's starting point बेटा. Still you are not getting any sentence. You can ask me. और कुछ doubts होंगे तो please 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 बता दीजिए. Yes, दीपश्रेय.
हाँ जी बेटा। आई थिंक इन टुमारो मॉर्निंग आई हैव सेशन, प्लीज प्लीज वॉच वंस अगेन, स्केड्यूल देख लीजिए, मुझे लगता है मेरा कल मॉर्निंग में सेशन है। यस, कल मॉर्निंग में ही है जो मुझे कंफर्मेशन मिला था, शायद से टुमारो मॉर्निंग और इवनिंग, आई विल चेक एंड टेल यू। बेटा निगेटिव मार्किंग के बारे में मैं आपको कंफर्मेशन, यस आई विल गिव यू इट आफ्टर आस्किंग टू बीओएस फैकल्टीज। मैं हमारे सीमा मैम, आशा मैम को पूछ के ये बताऊंगा आपको, बिकॉज आई रियली डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द फर्स्ट पेपर। सो जल्दी से जल्दी पेपर्स के लिए भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आरटीपीज, और इसमें एक मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर भी आ जाएगा आपको, सो डोंट वरी। यस, टुमारो मॉर्निंग सेशन है, यस। चलिए, सो टाइप्स ऑफ लीजेस बेटा वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सो लास्ट सेशन में याद आएगा तो ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज डज नॉट transfer substantially all the risk and rewards, but finance lease transfers all the risk and rewards to the lessee. And indicators are, you see here, it's a rattamar point. What is rattamar? It's a by heart point. Beta by heart karna hi padega all 5 conditions and deterministic conditions, and then beta it's a second one is a suggestive condition. So we have seen two parts, एक था deterministic, and deterministic के बाद हमने देखा था one is suggestive condition. तो deterministic condition एक देखा था और एक देखा था हमने suggestive condition. So if you remember, ये हमने देखा था accounting treatment. Yes, what we are going to see it today. So before starting today's session, but first I want to tell you 100 पेजेस के बुक में भी कुछ चेंजेस थे। 7 बजे मैं आपको 100 पेजेस के बुक के स्क्रीनशॉट्स देता हूँ बेटा, 100 पेजेस के बुक के स्क्रीनशॉट्स एट 7 o'clock। सी बताया बोलो, accounting treatment. So you can write this in the 100 pages book. Afterwards 100 pages ची बुक अपडेट करायची, झाली नाही असतं म्हणणं। 100 pages book, accounting treatment, let's understand it। lessor books, operating lease में I will show in the operating lease first, lessor books, you can check like this, profit and loss and balance sheet, write it in 100 pages book afterwards। okay, कहां पे लिखना है तो 100 पेजेस के बुक में लिखना है। देखो, he will record the asset in operating book, lessor records asset। okay, so he records by lease rental income and to depreciation, it's very simple। so this is lessor ka P&L expenses, this is income side, in balance sheet this is liability side, and this is asset side। so asset will be recorded by lessor in case of operating lease। you can see here operating lease में क्या होगा, asset is recorded by lessor। ठीक है, अरे है क्या नहीं बेटा। लेसी के बुक्स में देखो, लेसी is not concerned for the balance sheet, he is only concerned for P&L, and he will record to lease rental expenses, to lease rental expenses, लीज रेंटल एक्सपेंसेस ये हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन केस ऑफ लेसीज बुक्स। ओके, चलिए, सो दिस इज इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज।
Can you tell me in the finance list how it will look like? I'm waiting for your answer. I'm giving you exactly 2 minutes to answer it. Yes, waiting for your answer. Yes, how many of you can tell me the answer for Lease's books? But amortized word is for intangible assets, not for lease asset. For lease assets, it's depreciation. Okay, Neha. स्वाति सिंह की मेरे स्पेक्टेकल भी आपके जैसे ही है. ओके बेटा, वेरी गुड. और किसके क्या कमेंट्स है? नेहा के कमेंट्स है, यू आर ऑलवेज एनर्जेटिक. ठीक है, फाइनेंस लीज के बारे में बात करेंगे. कॉस्टिंग के क्लासेस कब से होंगे बसोराज जी? जल्दी हो जाएंगे, आई थिंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी विल स्टार्ट विद द कॉस्टिंग क्लासेस ऑन बोर्ड ऑफ स्टडीज बेटा. और जिनको एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड पेपर विल बी इन इंग्लिश होगा, तो फिर आप ब्रांचेस के पास भी जा सकते हो. आपको मेरे लेक्चर्स चाहिए होंगे तो. और कुछ आंसर्स? हाँ, कल एक क्वेश्चन आया था कि भाई सर आप जब पढ़ाते हो तो हिंदी में, ब्रांचेस में हिंदी में पढ़ाया जाता है और पेपर राइटिंग इंग्लिश में ही होता है, तो ये दिमाग में से निकाल दो कि हिंदी में आंसर लिखे जाते हैं. नहीं, पेपर इंग्लिश में लिखना है. एक्सप्लेनेशन पार्ट इज नॉट इन इंग्लिश, सो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स में फाइंड प्रॉब्लम. ओके, फाइनेंस लीज. ओके मानसी जी, थैंक यू. फाइनेंस लीज, लेसोर, लेसोर. लेसोर के बारे में क्या बात करेंगे बेटा, जल्दी से बताओ. लेसोर, लेसोर विल रिकॉर्ड द एसेट. लेसर जो है वो एसेट को रिकॉर्ड करेगा? नहीं रिकॉर्ड करेगा. लेसर वोंट रिकॉर्ड एसेट. देन लेसर रिकॉर्ड्स लेसी. एट विच वैल्यू? एट प्रिंसिपल अमाउंट. Normally I can't say principal exactly, but which is excluding interest. Remember, लेसी को डेबिट देगा. ओके, इन पी एंड एल दिस इज अ बैलेंस शीट, and P and L he records only, oh sorry, लेसर है तो इनकम है, बाय फाइनेंस इनकम. चार्जेस नहीं होंगे उसके लिए, फाइनेंस इनकम होगा. सो इंटरेस्ट, इट इज बेसिकली इंटरेस्ट. इन लेसीज बुक, लेसी विल रिकॉर्ड बैलेंस शीट में एसेट, देन ही विल रिकॉर्ड लाइबिलिटी साइड पे लेसर. लाइबिलिटी में क्या दिखेगा? लेसर. एसेट दिखेगा ऑन द एसेट साइड इन लेसीज बुक्स. एंड पी एंड एल में he will claim depreciation also and two finance charges. He will record finance charges as expenditure. तो ये दोनों में डिफरेंस है. Yes, so you got this difference. बेटा एक ही ध्यान में रखो, इसको 5 बार तो भी रिवाइज करो, कम से कम 5 बार. देखो एक सिंपली हाउ टू रिकॉल इट, वेरी सिंपल.
ऑपरेटिंग लीज, फर्स्ट थिंग दिमाग में डालो, फर्स्ट थिंग इन योर माइंड, नंबर वन, हु इज गोइंग टू रिकॉर्ड द एसेट? सी द डिफरेंस, लेसर. Lessor is going to record the asset. So asset recorded by him. So depreciation recorded by him. Very simple. So if he records the asset, then he will record not interest. He will record full rent income. Full rent income. Okay. So whatever he received, जो भी received होगा, ये full income करके दिखाया जाएगा. Whatever he received from the lessee, he records as an income. Okay. एकदम simple है. You got the difference? Yes. ये ध्यान में आना चाहिए. This is the crux of the standard. How you can visualize your balance sheet and profit and loss account. देखो मैं वापस से बोल रहा हूँ एक बार हिंदी में, मात्र हिंदी में समझा रहा हूँ, ध्यान देके सुनना बेटा, एकदम मस्त समझ लेना, ये बहुत जरूरी है. कुलदीप गुप्ता में क्यों सभी स्टूडेंट्स के तो ये लूंगा बेटा. हाँ जी कुलदीप, आप क्वेरी पहली बार भेज रहे हो तो मैं क्या करूं. सो लेसर जो है, ध्यान रखिए, ऑपरेटिंग लीज में एसेट को खुद रिकॉर्ड करता है, बिकॉज वो एसेट को दे नहीं रहा है. फाइनेंस लीज में कैसा होता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट होते हैं. तो लीगली भले लेसर ओनर रहने दो, पर एसेट रिकॉर्ड होगा लेसी के बुक्स में, और जो एसेट रिकॉर्ड करेगा वही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगा. जो एसेट रिकॉर्ड करेगा वही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगा. एक ध्यान में रखना, जो एसेट रिकॉर्ड करेगा वही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगा. यस सर, गॉट द कॉन्सेप्ट. एंड इनकम जो है, इनकम ये कौन रिकॉर्ड करता है? इनकम जो है ना, वो रेंटल इनकम लेसी नहीं रिकॉर्ड करता है. इनकम तो लेसर रिकॉर्ड करेगा. जो भी अमाउंट उसको मिलेगा लेसी से, वो पूरा इनकम में डाल देगा. उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है. दैट एक्सेप्शन आई एम गोइंग टू टेल यू, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टेल यू कि कभी कभी जितना रिसीव्ड हुआ फुल अमाउंट नहीं डालते. कब? आई विल टेल यू व्हेन इट इज इन द रेशियो आउटपुट. सो देयर इज वन एक्सेप्शन दैट वी आर गोइंग टू सी, डोंट वरी. ओके. अभी दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लस्सीच्या बुक्स मध्ये, लस्सी के बुक्स में ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल. ही रिकॉर्ड्स लीज रेंटल एज एक्सपेंसेस. वो क्या करता है, लीज रेंटल को एक्सपेंस करके रिकॉर्ड करता है. वॉट एवर इज पेइंग, वॉट एवर पेमेंट ही हैज डन, जो भी पेमेंट वो करेगा वो पीएनएलच्या डेबिटला टाकणार आहे, पीएनएल के डेबिट में डालेगा. एकदम सिंपल है. ओके, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट, अभी फाइनेंस लीज मध्ये काय होणार. सो फाइनेंस लीज में क्या होएगा, एकदम सिंपल है. लेसर जो है ना, लेसर वो एसेट को रिकॉर्ड ही नहीं करता है. सर वो एसेट को रिकॉर्ड नहीं करता है तो क्या करेगा, फिर लेसी से जो भी पैसा आने वाला है ना, उसके बदले में, एसेट के बदले में जितना भी लेसी से प्रिंसिपल अमाउंट आने वाला है उसको रिकॉर्ड कर देगा. ओके. मिनिमम लीज पेमेंट, मिनिमम लीज पेमेंट मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट, लीज रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी. लेसी के एंगल से जीआरवी लेंगे. ओके. एंड फाइनेंस इनकम इधर दिखाएगा, क्या बताएगा, जो इंस्टॉलमेंट, वो पैसा जो भी मिलेगा भाई, पैसा पूरा का पूरा जो भी मिलता है, इट विल गेट बाइफरकेटेड. किसमें बाइफरकेट होगा, एक जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, लेसी का बैलेंस कम ही होएगा. ओके. लेसी का बैलेंस कम होएगा, और जो बचा हुआ पार्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट का बैलेंस जो है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 10,000 मिला, 10,000 मिला, उसमें से एज्यूम करो 8,000 इज अ प्रिंसिपल अमाउंट, तो 2,000 उसका जाएगा इनकम साइड पे. ओके, फाइनेंस इनकम साइड पे, और लेसी का बैलेंस 8,000 से माइनस होएगा. वेन एवर इज रिसीविंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो लेसी का बैलेंस विल गेट रिड्यूस. ओके, लेसी का बैलेंस विल गेट रिड्यूस. वंस यू गॉट दिस, यू नो, बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा. लेसी के बुक्स में क्या होएगा, लेसी के बुक में एसेट है, एसेट है तो डेप्रिसिएशन है, एसेट रिकॉर्ड हुआ तो डेप्रिसिएशन है. और लेसर के एंगल से, लेसी के एंगल से क्या होगा, लेसर को पैसा देना है, देना है तो जब भी पैसा देगा तो प्रिंसिपल अमाउंट यहां से कम होगी, प्रिंसिपल अमाउंट फ्रॉम हियर एंड फाइनेंस एक्सपेंसेस ऑन द एक्सपेंस साइड. ओके. सो जब भी पेमेंट करेगा, सो इंस्टॉलमेंट वॉट एवर ही पेड, प्रिंसिपल अमाउंट में से जो जाएगा लेसर में से कम होएगा, फाइनेंस चार्जेस ऑन द एक्सपेंसेस साइड. इट्स वेरी सिंपल. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके. सपोज 10,000 का अमाउंट पे किया, 10,000 का अमाउंट पे किया, so 10,000 amount which is paid, beta, never in study material it is not given, and even in any book you won't find out the P&L and balance sheet का visualization. Yes, that's why I'm giving you this visualization कि visualization कीजिए. So 8,000 आप लोग क्या करोगे, 8,000 लेसर के बुक्स में से कम करोगे, और जो पेमेंट किया एक्सपेंडिचर, तो 2,000 जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस करके रिकॉर्ड करोगे. बस सिंपल है.
एकदम सिंपल है, -8,000 लेसर का बैलेंस उतना लाइबिलिटी रिड्यूस होगा. सो यू हैव टू बाइफरकेट ईच इंस्टॉलमेंट. हियर व्हाट हैपेंस, whatever amount operating lease में suppose if you receive 10,000, lessor will record it like income and let's see 10,000 पूरा का पूरा P&L में डालेगा. let's see will record it as expenses. वन का इनकम तो दूसरे का एक्सपेंडिचर, एक का इनकम को दूसरे का एक्सपेंडिचर. एसेट कौन रिकॉर्ड करेगा? लेसर रिकॉर्ड करेगा. डेप्रिसिएशन कौन रिकॉर्ड करेगा? जो एसेट रिकॉर्ड करेगा वही तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करता है. एसेट रिकॉर्डेड बाय लेसर तो डेप्रिसिएशन इज आल्सो रिकॉर्डेड बाय लेसर. ओके, ध्यान में आया क्या? यस. फाइनेंस लीज में क्या होगा? फाइनेंस लीज में इंस्टॉलमेंट विल गेट डिवाइडेड ओवर टू पार्ट्स. नंबर वन, पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है 8,000 का यस प्रिंसिपल अमाउंट, एंड 2,000 क्या होगा? 2,000 जो है वो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है. इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर एंड इंटरेस्ट इनकम. सो यू हैव टू बाइफरकेट दैट. ओके. Yes, beta. Once one person's expenditure will be recorded as another person income. Now, if you have any query, you can ask me in the comment section. If you can't visualize this P&L and balance sheet pro forma, okay, you can ask me. I'm waiting for your questions. Questions तुमचे, answer आमचे. Okay? Questions आपके, answer हमारे. मराठी भी सीख गए आप लोग तो. एकदम सिंपल है. So, bifurcation. So, my question, okay, my question to you is that suppose operating is lease is there, operating lease. Yes, मेरा क्वेश्चन है आप सबको. क्या क्वेश्चन है? 20,000. See, my installment is 20,000. Out of that, 16,000 is my principal amount and my interest amount is 4,000. You have to tell me. कोई भी आंसर नहीं देखेगा. Yes, you have to tell me. No one will see the answer. In case of operating lease, P&L of lessor. Operating lease में P&L of lessor. Who is giving me the fast answer? Fastest finger fast. तो देखते हैं आप सब में से पहला आंसर कौन देखता है? P&L of lessor में क्या दिखेगा? Yes, फटाफट फटाफट. Who will tell me? सबसे तेज आंसर कौन दे रहा है? Whether it will be 20,000 on the debit side, whether it is a 16,000 on the debit side, whether it is a 4,000 on the debit side, or 20,000 on the credit side, or 16,000 on the credit side, or 4,000 on the credit side. Yes, जल्दी से जल्दी 6 ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर आप मुझे बताओगे 20, 16, 4 on the debit side or 20 or 16 or 4 on the credit side. Who is answering very very fast? सबसे तेज आंसर देने में कौन आ रहा है? जल्दी 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 बताइए. वेटिंग फॉर योर आंसर. एंड करेक्ट आंसर देने वाले भैया है इट्स ऑपरेटिंग लीज. आई एम आस्किंग यू. और सबसे तेज आंसर देने वाले भैया हमारे है अंकुर. ओहो हो. अंकुर पटेल ने आंसर तो बराबर दिया. प्रतिज्ञा विद्यार्थी, she answered it but she won't answer where only 20,000. Many students have written 16,000. How it will be 16? ऑपरेटिंग लीज है. ऑपरेटिंग लीज है तो पूरा 20,000 रिकॉर्ड होगा. और पूरा 20,000 सबसे पहले तेज आंसर देने वाले आशुतोष दास. ईआरओ का बंदा, आई थिंक फ्रॉम कोलकाता. ईआरओ का बंदा है आशुतोष दास. इज फ्रॉम ईआरओ. ईआरओ है तो वेस्ट बंगाल वाला दिख रहा है बेटा आशुतोष. एंड यू आर करेक्ट. बाय लीज रेंटल 20,000. ओहो हो. सबसे तेज आंसर दिया जिन्होंने वो थे हमारे इनकम इनकम इनकम. किसी किसी ने खुशी
How it can be on the debit side, my dear? How it can be? जस्ट अप्लाई लॉजिक. ऑपरेटिंग लीज में मैंने पूछा लेसॉर. ऑपरेटिंग लीज मतलब क्या? ऑपरेटिंग लीज में प्रिंसिपल इंटरेस्ट बाइफर्केशन? नो, नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल. तो बाइफर्केशन नहीं है. तो क्या होगा? बाइफर्केशन नहीं है तो 20,000 पूरा रिकॉर्ड होगा. ऑपरेटिंग लीज में वी नेवर बाइफर्केट इट. ओके, सो वी रिकॉर्ड full income. Okay, if it is a finance lease, then only 4,000 will be recorded. If it is a finance lease, and 16,000 तो no सवाल ही नहीं है. 16,000 we never record anywhere, either operating lease or finance lease. Okay, now second question to you is that in case of finance lease, in the same question, in case of the finance lease, lessee's P&L, lessee's P&L, in lessee's P&L, स्वरूप यू आर रॉन्ग बेटा. ओडिशा का बंदा है आशुतोष. ओके, ठीक है भैया. फाइनेंस लीज में बताइए क्या होएगा? फाइनेंस लीज में हाउ इट कैन बी इंटरेस्ट? नॉट एट ऑल माय डियर. इंटरेस्ट क्यों? फाइनेंस लीज होगा तो इंटरेस्ट आएगा. ऑपरेटिंग में तो पूरा खर्चा इनकम बताना है भाई. पूरा 20,000 पूरा का पूरा देना है ना. क्या कर रहे हो? फाइनेंस लीज में होता है बाइफर्केशन. एंड सबसे तेज अभी दिव्या ने सिर्फ दिया है. दिव्या कुमारी ने सिर्फ 4,000 लिखा है. दिव्या कुमारी ने बाद में 4,000 क्रेडिट लिखा है. बेटा दिव्या, हाउ इट विल बी क्रेडिटेड? बेटा एक्सपेंडिचर है. हम लोग देख रहे लेस्सी के बुक्स. लेस्सी मतलब अ पर्सन हु हैज टेकन द एसेट, सो ही इज पेइंग इट, और ही इज पेइंग इट मींस इट्स एन एक्सपेंडिचर, एंड ही विल रिकॉर्ड फाइनेंस कॉस्ट एज ₹4,000. क्या करके रिकॉर्ड करेगा? तो 4,000 पीएनएलच्या डेबिटला. ओके, 4,000 पीएनएल के डेबिट में रिकॉर्ड होएगा. याद रखना बेटा, पीएनएलच्या डेबिटला 4,000. क्यों नहीं आ रहा है बेटा? वाई आर यू आंसरिंग रॉन्ग? VIU, वैल्यू न्यूज. मोहम्मद सोहेल, वेरी गुड बेटा. तन्नू 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 बेटा, रॉन्ग आंसर. 20,000 no beta, is a finance lease. Finance lease में we focus only on interest component, not full component. Okay, last question of the day. And one more thing you recall, yes, you have to write, that is to depreciation. No one mentioned that. Okay, lessee will record also in P&L depreciation. Amount is not aware, but depreciation will be recorded by the lessee. So depreciation ये lessee ही record करेगा. Though amount is not given, but lessee will record the depreciation. और ये किसी ने भी लिखा नहीं है. 16,000 कहां पे होगा बेटा? 20,000 का पेमेंट हुआ तो एंट्री क्या करेगा वो? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 4,000, लेसॉर अकाउंट डेबिट 16,000, टू बैंक 20,000. सो लेसॉर का जो लाइबिलिटी का बैलेंस है, लेसॉर का जो लाइबिलिटी का बैलेंस है, उसको वो रिड्यूस करेगा. लाइबिलिटी साइड से रिड्यूस होगा. Yes, lessor is showing on the liability side. He is shown as a creditor. He is shown as a creditor. He is shown as a creditor. Oh, he is shown as a creditor. Call कर.
अरे मैंने फाइनेंस लीज ही लिखा है ना रे भैया, इधर फाइनेंस लीज। आई एम आस्किंग यू दी फाइनेंस लीज ओनली। कुलवीर सिंह क्या कर रहे हो भाई? ऑपरेटिंग लीज में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बाइफरकेशन नहीं होगा। यस बेटा, नो जीआरबी प्लस इज नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन। ऑपरेटिंग लीज 50,000, आउट ऑफ दिस 35,000 प्रिंसिपल अमाउंट and interest amount is 15,000. In the books of lessee, operating lease in the books of lessee. Now I want everyone correct answer. Whether lessee will record full 50,000 as an expenditure or 35,000 or 15,000. कोई गलती नहीं. Now I don't want any mistake. Huh? Any mistake. No mistake, my dear. ऋतुराज, अरे ऑपरेटिंग लीज है बेटा, ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज। हर्षिता, operating lease, my dear. Prince understood it correctly. Kartika also understood it correctly. क्या कर रहे हैं ना ये लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऋतुराज, what wrong with you यार? अनमोल, what is? जय पटेल तो पूरा गलत आंसर, पूरा गलत। 50,000। अरे ऑपरेटिंग लीज में नो बाइफरकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। नो बाइफरकेशन, अंकित ने बराबर लिखा सर, नो बाइफरकेशन। और यही केस यदि फाइनेंस लीज होती तो ओनली 15,000 एंड 35,000 ही हैज डिडक्टेड फ्रॉम प्रिंसिपल अमाउंट। मैं बोल रहा हूँ ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज। एक बार है ना कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो, चलो शांति से रिकॉल करो, शांति से। एकदम बराबर लेवल पे लेके जाओ बेटा, कॉन्सेप्ट को समझ लो। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी मेरे पेशेंस लेवल खत्म होने को आया। इट्स ऑलमोस्ट 6:39। शांति से रिकॉल करो, शांति से। How you can make a mistake, Ray? Same thing again and again. You are CS student or any other beta 11, 12 standard student. If you don't want to grasp these things, beta, how can I help you out? इतना डिटेल में बता रहा हूं। ऑपरेटिंग लीज में प्रिंसिपल इंटरेस्ट का बाइफरकेशन नहीं होता है, स्टिल यू आर आंसरिंग 15,000। Those who made mistake, बेटा मैं क्या सबके आंसर्स पढ़ू क्या बेटा? कुलदीप, इट्स नॉट पॉसिबल ना। जो गलत आंसर दे रहा है उनके आंसर्स में पढ़ूंगा। ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स आर आंसरिंग। If I'm getting the wrong answer, jaldi se I can see it. Yes, though you are giving the wrong answer, but at least they tried it. ये मेरे लिए सबसे important है. Don't get nervous. Please try to follow the concept. At least if you are giving the wrong answer, I can rectify you. So it's important
प्रिंस बोल रहा है who are giving the wrong answer they are theory lovers, and प्रिंस बोल रहा है those who are giving the correct answer are practical lovers. Why बेटा? Why such bifurcation? Almost all subjects are important, equally important for you. प्रिंस, इतना डिटेल में बताने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुश्किल होता है ना बेटा, बुरा तो लगेगा ना, थोड़ा चिल्लाना भी पड़ता है भाई. नेक्स्ट टाइम यू वोंट डू दिस थिंग्स. पाथ राणा बोल रहा है कि इट इज सिंपल बट वी कांट ग्रास्प इट. बेटा पाथ, कैन यू टेल मी व्हाट इज 2 + 2? हाँ, सो यू वांट ओनली 2 + 2 आंसर क्वेश्चंस इन एग्जाम. ग्रास्पिंग बढ़ेगा कैसा? नहीं, सीए स्टूडेंट हो भाई, फोकस बढ़ाओ. इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है. कम टू क्वेश्चन. हाउ मच क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड इन द लास्ट सेशन? मुड़ जाता है यार, इतना एक्सप्लेन करने के बाद कुछ तो गलत आंसर देते हो. पूरा तीसरी बार सेम क्वेश्चन आई एम आस्किंग. चलो लेट स्टार्ट. फाउंडेशन के स्टूडेंट्स करते हैं ना बेटा तो आई कैन अंडरस्टैंड यार. But intermediate students and final students, if they are making the same mistake and if they are making this type of errors, 20,000, I'm telling you from the last 10 minutes that 20,000 will not be bifurcated in case of operating lease. Operating lease में पूरा खर्चा दिखेगा, पूरा income दिखेगा. And in case of finance lease, finance, the term itself, operating मतलब day to day. Finance मतलब money, interest, finance. So finance lease में सिर्फ interest expenditure दिखेगा. है, चलिए. Before break, I'm explaining one more concept. चलो. सेल एंड लीज बैक. चलो. यस. कम टू नॉर्मल लेवल. यस बेटा. नहीं, एंग्री नहीं बेटा, थोड़ा बुरा लगता है ना कि इतना लास्ट कितने मिनट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यू आर गिविंग 4,000 आंसर्स एंड कुछ भी मतलब. चलो ठीक है, कुछ भी. यस. हो गए, चिल चिल चिल. टिल एग्जाम्पल 3. अभी देखो, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ. प्लीज फोकस नाउ फॉर नेक्स्ट 10 to 15 minutes. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड थियोरी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. Yes, if you don't understand this theory, it will be difficult. I will explain you logically what is going to happen. ठीक है. चलो, सेल एंड लीज बैक. ठीक है.
Sanket sir, and here I will write my partner name, Nilesh Thorat. Okay, Nilesh Thorat. Try to understand one concept. Okay, नीलेश जी क्या बोल रहे? नीलेश जी has one equipment. Understand this concept very beautifully. Equipment, okay? Now, Nilesh ji, assume he's in financial trouble. So his financial crisis, financial trouble to Nilesh ji. He's doing one business, okay? Display is not visible. Q? Display is not visible. Visible, no? Yes. So Nilesh ji has one equipment. Now, he's in financial trouble. Sanket sir, beta, yes, he's very wealthy person. Set, yes, Shetji. ओके, साहूकार पुराने जमाने का संकेत सर भी एक साहूकार है बेटा, एज्यूम करो. ओके, नाउ व्हाट हैपन? शेठजी मतलब यस, फाइनेंसर इन सिंपल लैंग्वेज. सो संकेत सर व्हाट हैज, बेटा संकेत सर व्हाट ही हैज डन, ही फाइनेंस्ड नीलेश भाई 50 lakhs rupees. How much he financed? 50 lakhs rupees. But beta, he has taken the ownership, legal ownership of asset. Sir, what about possession? Are wait now, we'll tell you. Ownership is transferred to Sanket sir. Okay. So he financed 50 lakhs and Haji beta. Now what happened? Sanket sir has transferred. Sanket sir has transferred the possession. Possession. See, what I want to tell you. Possession means Sanket sir has given this asset on lease. So lease. But Nilesh Thorat itself, Are ha beta, he was in the crisis. Sanket sir removed him from the crisis. Now equipment is with, okay, is with, possession is with Nilesh. Nilesh gives rent. Sanket sir has financed to the Nilesh. So money transferred, but rent is given by Nilesh to Sanket sir and possession is transferred to Nilesh. What happened? What happened? So it's a pure, it's like financial transaction. Now assume equipment life is 10 years. But Sanket sir has given this lease asset only for 3 years. So, but obvious, this is operating lease. This is operating lease. Though the asset is of, now because ownership is with Sanket sir, so Sanket sir will decide, no, whether I want to give this asset to Nilesh or not, or for how many years. बस नीलेश को 3 साल के लिए दे दिया एसेट. संकेत सर बोले चल ले भाई नीलेश, 50 लाख रुपए में तुझे मैं फाइनेंस भी कर दिया और तेरी एसेट तेरे पास ही रख. तेरी एसेट तेरे पास ही रख, हर महीने को लीज ट्रांसफर कर देने का. हाँ जी सर.
तो नीलेश की खुशी क्या मिली? 50 लाख का फाइनेंस मिला, एसेट का पोजीशन मिला। संकेत सर को क्या फायदा हुआ? हर महीने रेंट भी मिलेगा और ओनरशिप भी है ही। सो साहूकारी का ही बिजनेस है एक टाइप का। आया समझ में? शेठ जी का ही बिजनेस है एक टाइप का। सो दिस इज कॉल्ड एज सेल एंड लीज बैक। हाँ, नाउ sometimes sometimes what happens, these transactions can be, you know, used as, ट्रांजैक्शन कैसे यूज किए जाते? फॉर टैक्स सेविंग पर्पस। ओके सर, टैक्स के लिए यूज करते हैं? हाँ जी बेटा, यूर टैक्स फैकल्टी विल टेल यू हाउ सेल एंड लीज बैक विल बी। हाँ जी बेटा, कैसे सेल एंड लीज बैक का क्या करते बेटा, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसमें टैक्स में बेटा, नाउ आई एक्सप्लेन यू ना, इन इंग्लिश ओनली आई एक्सप्लेन यू। Nilesh Thorat asset transferred to Sanket sir. He has given 50 lakhs. Ownership is with Sanket sir. But Nilesh Thorat is in business. So same asset is transferred to Nilesh Thorat. Why it is transferred? Because possession is given and Nilesh Thorat will pay him in lease rental. And this case is only for 3 years, and that's life of the asset is 10 years, but Sanket sir has given this asset only on lease for 3 years. So this is now ownership is with Sanket sir, तो Sanket sir will decide the terms. Okay, ये तो शुक्र करो कि उन्होंने एसेट दे, बस यूज नीलेश जी ले अपनी जिंदगी। ओके, तो नीलेश थोरात को एसेट भी दे दिया संकेत सर ने। हाँ हाँ हाँ। So now the question is, listen it carefully. In Nilesh books, asset book value is 30 lakhs. Asset book value is 30 lakhs. And fair value, sorry, it's selling price. 50 lakhs ka finance is a selling price. So selling price is 50 lakhs. And fair value is 70 lakhs or 65 lakhs. Fair value કેટલી છે? Fair value, if he sells today this asset to any other person, he will get 50 lakhs rupees. Now, here, what is the profit to Nilesh? Can you tell me the profit? What is the profit? Profit to Nilesh is selling price no beta, no Surender ji, no interest. Okay, if it is a finance lease, then if 10 years out of that 3 years only given, so it is an operating lease. So selling price minus BV carrying amount, book value. Book value means in the books you are showing this asset at 30 lakhs. So what is the difference? So difference is 20 lakhs. What is the difference? Difference is 20 lakhs. Yes, sir. Got the concept. Profit is 20 lakhs. Selling price minus book value. Sir, what about fair value? So fair value is higher side. If it is a higher side, it's okay. Huh? This is genuine transaction in that case. If it is on the higher side, it is more than the selling price, it's okay. Huh? The problem is when it is less than the selling price. But here, 20 lakhs profit, you will record it immediately. You will record it immediately. But suppose there is one exception. There is one exception. Try to understand. If selling price
is less than fair value. See the sentence. Selling price is less than the fair value. Try to understand, my dear. If selling price is less than the fair value, but the problem is that if book value is 30 lakhs, selling price 27 lakhs, and fair value 40 lakhs. Now 40 lakhs we won't consider because it is more than the selling price. But he sold the asset at loss, and loss will be loss કેટલો છે? Loss will be बेटा कई हुआ क्या हुआ रे इसको? बोलो। Loss is loss is 3 lakhs. हाँ, loss is 3 lakhs. ये देना yes, loss is 3 lakhs बेटा. Okay, हाँ जी. But when you are in loss, try to understand. It should not compensate by lesser lease rental. Now, what is the concept? Should not compensate by lesser lease rental. Suppose, now you know, Sanket sir ko Nilesh has sold this asset for 27 lakhs. Sanket sir accepted it. Market is 40 lakhs and I am getting the asset at 27 lakhs. Yes, I am ready to take it at 27 lakh. Though, yes, Nilesh, why he is happy to sell it at 27 lakh? Because, yes, tell me, why? Because Nilesh is getting the same asset to use. आज किसी और को बेच दिया वो asset, तो it might happen, Sanket sir has given him it back. But it might happen that he sold it into the market, that asset, and market may say that person has not given him in the asset on the lease. So he's ready to take it at selling price 27 lakhs. Because he's getting the asset at 27 lakh. Okay. He will use it at lease rental. And lease rental, try to understand. Now, monthly lease for such assets is 25,000. Monthly lease is 25,000. Okay. Normally in market, what is the rent? I'm going to explain it in Hindi. Don't worry, beta. I'm going to explain it in Hindi. First, I want to explain it in English. 25,000 is the rent expenditure. What is the rent expenditure? 25,000. Normally, lease rentals in market is going on 25,000. But now Sanket sir has soft corner towards Nilesh. Okay. Why? Because he got that asset at 27 lakhs. Market mein 40 lakhs. And he has given it at 27 lakhs. Nilesh, do one thing. You pay me only 22,000 rent. You pay me only 22,000 rent. Sir, market mein 25,000. Nilesh sold asset at lower than the market value. Sanket sir has given the asset on lease on lower than the market value. So 25,000 से संकेत सर ने भी lower पे दिया and नीलेश ने भी 40,000 से 27,000 पे दिया. तो बेटा, in that case, this 3 lakhs will not immediately recorded in P&L. It will be deferred. So 3 lakhs loss, Nilesh will record over 3 years. Operating lease. Agreement is of 3 years. So 1 lakh. Nilesh should not record 3 lakhs loss
immediately if Sanket sir charges him less than the market rate. How many of you got the concept? Exception. How many of you got the concept? Yes, कांचन कुमारी. एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है वो इंग्लिश में, हिंदी में रहेगा, और बाकी सब इंग्लिश में रहेगा. पेपर सॉल्विंग पूरा इंग्लिश में रहेगा, सिर्फ एक्सप्लेनेशन पार्ट इज इन हिंदी. कॉस्टिंग एफएम का. हाँ जी, और क्या क्वेश्चन है? बेटा, एसेट बेचने के बाद लीजबैक करने के टाइम पे पोजेशन झालं 10 मिनिटाचं. 10 मिनिटं करून टाक ना, आता संपवायचंय. यस, ठीक है, चलो. वेरी गुड. बहुत से बच्चों ने लिख दिया गॉट इट सर. नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन हिंदी. 15 तीन तरह, सेम फॉर्मेट. चलो, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. हाँ जी. हाँ, ओके. सी, मैं एक बार हिंदी में बताता हूं. नीलेश थोरात से संकेत सर ने एसेट लिया. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर टाइम इन हिंदी, और वापस से आई विल एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश बिफोर ब्रेक. ओके, बिफोर ब्रेक बेटा आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी. सी, नीलेश थोरात जो है, इन्होंने, इनके पास एक इक्विपमेंट है. एक इक्विपमेंट है. उसने क्या किया, 50 लाख का वो इक्विपमेंट है. सॉरी, उसके बुक में वो इक्विपमेंट 30 लाख दिख रहा है. उसके बुक में कितने का इक्विपमेंट है? 30 lakhs. उसने क्या किया, संकेत सर को ये इक्विपमेंट 50 लाख में बेचा. कितने में बेचा? संकेत सर को 50 लाख में. सर, मार्केट में कितना वैल्यू चल रहा था? 65 lakhs. तो संकेत सर को 50 लाख में क्यों बेचा? क्योंकि संकेत सर जो है वो एसेट वहां से उसके पास से उठाएंगे और उसी को वापस से एसेट देने वाले हैं. ओह, तो नीलेश का एक लालच क्या था कि भाई मेरी एसेट मैं ऐसे लोगों को बेचूंगा, पैसा भी लूंगा, और पैसा लेके वो लोगों ने मुझे एसेट ही नहीं दिया तो मार्केट में मैंने बेच दिया, और वो लोगों ने एसेट दिया ही नहीं, तो ये संकेत सर ने क्या किया, ठीक है, मार्केट से मुझे कम पैसा दिया, 50 lakhs में ही दिया, मुझे 50 lakhs ही मिलेगा, पर आज मेरी एसेट मुझे यूज करने को मिलेगी. ऐसा होता है, ऐसा होता है. एग्जाम्पल देता हूं. अच्छा खासा आपका घर है. एक एग्जाम्पल है, डोंट टेक इट पर्सनली. एक घर है. क्या हुआ, आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ गया. आपको घर छोड़ना नहीं है, आपका खुद का घर है. खुद का घर है, आपने क्या किया, किसी दोस्त को बोला, भाई एक काम कर बेटा, मेरे दोस्त, मुझे इसमें से निकाल, ये घर के कब्जा ले ले. देख, घर 70 लाख में है, पर मैं तुझे कितने में बेच रहा हूँ? 50 लाख में. पर मुझे मेरे घर में रहने को दे. वो बोलेगा, भाई मेरे को रहने को दूं. और मैं उसको बोलूंगा, भाई देख, तू तो है बड़ा आदमी, तो तुझे मैं हर महीने रेंट पे कर दूंगा, सिर्फ बचा ले, मेरे बीवी बच्चों को घर से बेघर मत होने दे. वो भी बोल दिया, ठीक है, चलो, दोस्त है. यस, अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन नीड. ओके, तो बहुत बढ़िया. दोस्त ने, मेरा दोस्त है सर, उसको मैंने घर में से घर को बेघर नहीं होने दिया, और मैंने उसको फाइनेंस कर दिया 50 लाख का. सेम घर में रहेगा, हर महीने मुझे रेंट पे करेगा. सर, रेंट ज्यादा पे किया तो चलेगा, कम नहीं पे करना है, मार्केट से कम नहीं पे करना है. दोस्ती निभाओ पर व्यवहार भी निभाओ. हाँ सर, समझ में आया. व्यवहार से उसको रेंट तो मिल जाएगा. और क्या अच्छा बात हुआ, अच्छी बात ये हुई, 65 lakhs का फेयर वैल्यू था, उसको 50 लाख में मिल गया. अच्छा, नीलेश का फायदा क्या हुआ? नीलेश के बुक्स में 30 लाख का घर था, बुक वैल्यू, इक्विपमेंट ऑफ 30 lakhs, ही इज सेलिंग एट 50 lakhs, सो 20 लाख का प्रॉफिट. फेयर वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट. नीलेश के लिए फेयर वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट. 30 का 50, 20 लाख रुपए पे प्रॉफिट रिकॉर्ड, इमीडिएटली प्रॉफिट रिकॉर्ड कर. ओके, दूसरी केस. हाँ, तो ये जेन्युइन है ना, मार्केट से सस्ते में बेचा और खुद ने पोजीशन ले लिया, खुद ने पोजीशन ले लिया. एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल. सर, ये एक्सप्लेन करना इज वेरी डिफिकल्ट ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको.
अब इसका एक एक्सेप्शन है सर, एक्सेप्शन को समझ लीजिए। नीलेश को ये घर का 30 लाख का बुक वैल्यू था। संकेत सर बोल दिए जा, जो करना है कर, मैं नहीं देता हूं, तुझे घर में वापस रहना है, अभी मेरे टर्म्स पे चल, मेरे टर्म्स पे चल। 30 लाख का तेरे बुक में दिख रहा है, मैं क्या करूं उससे? तेरे बुक में कुछ भी देखने दे। आज मार्केट में वैल्यू 40 लाख है, मैं 27 लाख में लूंगा। मार्केट में वैल्यू कितनी है? 40 लाख, मैं कितने में लूंगा? 27 लाख। वो बोलेगा सर मार्केट से वैल्यू 40 लाख चल रहा है, तुम 27 लाख में। फिर मैं तुझे वापस घर में रहने को दे रहा हूं ना, वापस घर में रहने को दे रहा हूं ना। संकेत सर ने क्या बोला? मैं 27 लाख दूंगा। नीलेश के बेटा पत्थर के नीचे हाथ है। नीलेश क्या बोलेगा? ठीक है संकेत जी, आज मेरे दिन अच्छे नहीं है, आप उसका फायदा उठा रहे हो। सर फायदा नहीं उठा रहे हो, व्यवहार से तुझे ही रहने को दे रहा हूँ, व्यवहार से तुझे ही रहने को दे रहा हूँ। ओके, मैं 27 लाख रुपए क्यों दे रहा हूँ? 27 लाख रुपए इसलिए क्योंकि मुझे तो जरूरत भी नहीं है, तुझे जरूरत है, तो तू 27 लाख में ले ले। नीलेश जी तैयार हो गए। 30 लाख का घर 27 लाख में बेच दिया। मार्केट में भले कुछ भी रेट चलने दो, 40 लाख चलने दो। पर अभी क्या हुआ? नीलेश जी और संकेत सर ने, संकेत सर के पास दो ऑप्शन है। जितना मार्केट में रेट चल रहा है, जितना मार्केट में रेट चल रहा है, मार्केट में कितना रेट चल रहा है? रेंट रेंट 25,000, वो घर में रहने का 25,000 ही मिल रहा है, तो 25,000 रेंट चल रहा है। तो संकेत सर ने 25,000 ही नीलेश को बोला कि नीलेश हर महीने 25,000 देने का। नीलेश बोला हाँ भाई, 25,000 का 25,000 ही देता हूं। तो संकेत सर जो है 27 लाख में जो एसेट लिए, नीलेश को जो 3 लाख का लॉस हुआ, नीलेश तुरंत रिकॉर्ड करेगा। नीलेश तुरंत अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा, 3 लाख का लॉस रही, 3 लाख का लॉस पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर देगा। पर पर अभी संकेत सर है ना बेटा, थोड़े सॉफ्ट हो गए। नीलेश ठीक है, मार्केट में 25,000 रेंट चल रहा है, तूने 30 लाख का घर मेरे नाम पे 27 लाख में कर दिया, तो तू एक काम कर, मैंने लॉस में बेचा, तूने लॉस में बेचा नीलेश, तूने घर लॉस में बेचा, मुझे पता है मार्केट में 40 लाख रुपए, मैं तुझे 27 लाख में दे रहा हूँ। नीलेश एक काम कर, तू हर महीने में, मार्केट में 25,000 का रेंट चल रहा है, तू मुझे 18,000 ही पे कर। सर तो ये जो नीलेश को लॉस हुआ ना 3 लाख का, अभी वो क्या हुआ? फायदे में भी है, क्योंकि उसको रेंट भी कम पे करना पड़ेगा। तो 3 लाख का लॉस नीलेश तुरंत रिकॉर्ड नहीं करेगा। वो 3 लाख का लॉस 3 साल में, सर 3 साल क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट 3 साल का बना है, रेंट एग्रीमेंट 3 साल का बना है, लीज बैक का 3 साल का एग्रीमेंट बना हुआ है। तो वो 1 लाख 1 लाख 1 लाख इस तरीके से लॉस ला रिकॉर्ड करना। आया समझ में? लॉस को कैसे रिकॉर्ड करेगा? 1 लाख 1 लाख 1 लाख, यदि संकेत सर ने लीज रेंट में कटौती किया। यस, ये थी कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट अभी भी बची हुई है, ब्रेक के पहले वो भी बता दूंगा। हाँ जी सर। चलो, yes, this is only the case when life of the asset is 10 years, but you are given the asset on the, हाँ जी, yes, now it's clear beta my dear, now it's clear my South Indian students beta, I am going to explain it, don't worry. I know this is the difficult concept, so I'm going very slow sir, very slow, but हिंदी वाले अंडरस्टूड? अरे अंडरस्टूड क्या, हिंदी वाले तो बोलो यार। Those who can understand Hindi can tell me, got the concept or not? बोलो यार फटाफट, हिंदी वाले। हम्म, माधव तिवारी, इतना फालतू क्वेश्चन है माधव तिवारी, कैसे रे मन में भी कैसे क्वेश्चन आते हैं? भाई माधव तिवारी, अभी मैं ऐसा कुछ बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा। आपने एक क्वेश्चन भी कैसे पूछा 25,000 के बदले में 24,999? यार 1 रुपया तो छोड़, कितना चिंदीगिरी करने का रे? 1 रुपए के लिए क्या अभी तुरंत में डिवाइड करूँ क्या? अरे 25,000 होगा, 15,000 रेंट लिया तो ठीक है, 25,000 का 22 23 24 लिया तो ठीक है ना, इट्स ओके, मतलब मार्केट से ही चल रहे हो ऑलमोस्ट।
because 3 lakhs is not immediately recorded as a loss. When beta deferment is there, means it is not like you are recording immediately. So you are dividing it. So you should not record your loss. What is the logic is very simple. S19 wants whenever there is something, beta, which is not going it properly. Okay, when it is not as per market terms, so you should divide your loss of profit. Okay, you should divide your losses according to you should defer your losses. This is what S19 requires. You should not record your loss immediately. So logic is not there. Anything means they just want key. Institute does want you should not take benefit of lower rent and selling price lower than the cost. Okay, book value. You should not take that benefit for recording the loss. Who decides the market value of rent? Good question, Mr. Pai. But now in my society, what is the market rate? If you want any flat on rent, your agent will tell you market values of that premises. How much rent is going on in your, now see, when I visited Kolkata, so there is one. Yes, beta. We have taken one premises on the rent in Kolkata when I visit Kolkata because it's regularly I'm visiting Kolkata. So in that case, the rate in that, Lake Town area, Lake Town is there in Kolkata. So, and Salt Lake rate is 50,000. Lake Town rent is 25,000. If you go near Shobha Bazar, Sova Bazar, in that case, beta, your rent is still going down, but how it decides as per market locality. How this question comes to your mind, Pai? Yes, market means what? You are now in our society. If 2 BHK, if you want it on rent, it is 25,000. If you want 3 BHK on rent, it is 35,000. If you want 4 BHK on rent, it is 60,000. So market will decide it. If market, बेटा कौन देगा रे? इतना भी फायदा उठाओ मत सामने वाले का. कितना मतलब वो नीलेश की वाट लगा दी. गुड क्वेश्चन. If market rent is greater than, sorry, your rent is greater than the market rent, then no, मतलब you are only harsh with that नीलेश. संकेत सर सिर्फ उसका ये फायदा उठा रहे. हाँ जी. I want to explain you last concept. Okay. Last concept बेटा. माधव ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं. आज कैसे पूछा रे बेटा 24999 का? नॉर्मली माधव ऐसा कभी पूछता नहीं है. Yes, Swendu Ghosh is asking me, sir, you are known all of the Kolkata area. No, but not all, but many of Kolkata side. Yes, तो भाई कैसा है, वो मेट्रो में 4-5 बार घूम लिया तो पूरा कोलकाता समझ में आता है ना बेटा, बेलगछिया किधर है और क्या क्या किधर है. यस. तो सर जी, हम हैं लास्ट कॉन्सेप्ट पे. यदि बुक वैल्यू, सेलिंग प्राइस, बुक वैल्यू कितनी थी? 30 lakhs. फेयर वैल्यू है in between 40 lakhs and selling price is 55 lakhs. तो बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू का डिफरेंस, एक्चुअली प्रॉफिट इज बुक वैल्यू एंड सेलिंग प्राइस का डिफरेंस. सो एक्चुअली प्रॉफिट इज 25 lakhs, बट व्हाट हैपेंस? P&L में डालेंगे 10 लाख रे इमीडिएटली. And 15 lakhs you will transfer, you will defer 15 lakhs profit. So fair value and selling price ka difference you will defer. If selling price below fair value, then doesn't matter.
but its fair value below selling price, then beta, there is a matter. You should defer this profit. You should defer this profit. Okay. Difference between fair value and selling price. Sir, if reverse is the scenario, 30 lakhs is the selling price. 15 lakhs is the fair value. And selling price is 20 lakhs. Loss. Sorry, this is a book value. Sorry, this is a book value. 30 lakhs book value, fair value 15 lakhs. Loss of 15 lakhs immediately. Loss is recorded immediately. लॉस को तुरंत ही रिकॉर्ड करना है. एंड फेयर वैल्यू एंड सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 5 लाख 5 lakhs प्रॉफिट इज डेफर. प्रॉफिट क्या करना है? डेफर. मस्त कॉन्सेप्ट. ओके देखो, मतलब एक चार्ट में बना के देता हूं. There are 3 parts. See, this is a master chart. Fair value is greater than selling price. Master chart. Try to understand. Book value. Case 1. Fair value. Sale and lease back. Chart name is sale and lease back. Case 1. Fair value is equal to selling price. Madam जावा ना. 8 8:30 होतील. Fair value is equal to selling price. In that case, remember, profit or loss recognized immediately. Case 2. Selling price is less than fair value. Selling price is less than fair value. If profit, मतलब बुक वैल्यू और सेलिंग प्राइस के बीच में प्रॉफिट is immediately recorded, losses में 2 पार्ट. Not compensated by less lease rental, non-compensated by less lease rental, immediate. And compensated by less lease rental, तो defer. Case 3, if selling price is greater than fair value, difference between book value and fair value immediately recorded. Second one, fair value and selling price. Here always profit is deferred. Always profit, always. Because fair value is always less than selling price. So here is always profit and that is deferred. This is a master chart. If you understand this chart, you can solve
एनी क्वेश्चन रे. मास्टर चार्ट बाय संकेत सर. मस्त चार्ट है. सो नाउ इफ यू अंडरस्टूड दिस चार्ट, ब्रेक ले लीजिए और ब्रेक में हमारे दोस्त क्या करना बेटा, सॉल्व सॉल्व इलू थ्री, इलू थ्री एंड टीवाई के 14. दो क्वेश्चंस को सॉल्व करो, टीवाई के 14 एंड इलू थ्री, एंड यू विल गेट द आइडिया व्हाट इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज. केस 1 2 3, टेक अ ब्रेक. ब्रेक में सॉल्व कीजिए इलू थ्री एंड टीवाई के 14. यस, चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए लगे तो. मास्टर चार्ट बाय मास्टर. MP. Once chart, you can solve any question. Cases, identify case and find out the answer. Case देख लीजिए. ओके, सो मनीष जी एक छोटू सा ब्रेक ले लीजिए.
Beta, day before yesterday, I taught you about IRR formula. And I think we are getting the answer 12.61. We were using the formula correct in Excel. Only one mistake I had done that I will tell you today. See, I have written all these things. 50,000 we are getting for 4 years. And in 5th year, we are getting 50,000 plus GRV 40,000. And if you remember, you can see here, guess rate. Yes. Yes, I will show you the answer. Okay. So you can see here, I will use the Excel function for you. See, this was our year, if you remember. Yes, I will do this. Wait a second. Hanji. How we have calculated? Yes, quickly revise this on Excel itself. I will show you the answer. Cash flows. Discounting factor we have used. Guess rate at the rate of 10%. Then what we have taken on the calci? Yes. We have taken on calci 1 divided by 1.1 raised to first year it's a 0, so it's a 1. Then but our same function I will use it, so I will get up to, yes, I will round it off up to 4 digits. So round up, I will use round up figure up to 4 digits, and same function I will use over here. So I will get 1.90918264. I think we have not taken first one. So entire row, I will delete it. हाँ जी, so हमने ये लिया था. If you know, हमने कैलसी पे लिया था 0.9091. Yes, then we have multiplied by this discounted cash flow. तो मोबाइल चालू ठेवा. Discounted cash flow. You can see here now multiplication. I will multiply 50,000 into 0.9091. So I will get the 45,000, and same function I will copy paste over here. So, and I will take the total. Excel will make your life very simple. So you are getting 2,14,371. If you remember this, yes, comma डाल देता हूँ बीच में मैं. Number. Okay. Then beta, we use the discounting factor as we require the answer lesser. We want answer 2 lakhs. So we have considered 15%. If you remember, so how to take it on calci is equal to 1 divided by 1.15 raised to is equal to, if you done on calci, is equal to 0.86. Yes, I will do this rounding off. Yes, round off to 4 digits. So you can see here, I can take on calci beta 0.8696. You are getting the same answer. Then we have calculated discounted cash flow. Then is equal to, we multiplied 50,000 into 0.8696. 43,480. And same function we copy paste. And here also we are getting the same answer. Number. Only I will show the comma. Hanji. So here you can see discounted cash flow
अभी बेटा थोड़ा सा इसको सजा देता हूं. यस, इसको थोड़ा एग्जाम पैटर्न में कर लेता हूँ. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. यस, और ये इसको थोड़ा सजा दिया मैंने. कंट्रोल बी, टोटल को Alt HBU. I will use the same function over here. Okay, so this is a total. You can see here difference between these two. Yes, I want इसका difference कितना है? You can take a difference between these two. 26,873 is a difference. And if discounting factor, you can see here now I have done that. Keeping base. So this is how you solve. If you don't have Excel, keeping base कितना? 10%. आंसर इज इक्वल टू आंसर. इसको छोटा कर देता हूँ. 10%. यस, इसको भी छोटा कर देता हूँ. हाँ जी, प्लस इसको मर्ज कर देता हूँ बेटा मैं. दो इसमें. हाँ जी, आपको भी एक्सेल आ जाएगा बेटा ओवर द पीरियड, डोंट वरी. ये थोड़ा प्रैक्टिस लगता है इसको. 10%, अभी मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ तो मेरा एक्सेल अच्छा है. सो 5% से डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ा दिया. यस, यहाँ पे मैं इंक्रीज का ये डाल देता हूँ. एक नया फंक्शन है. तो मेरा आंसर कितने से हुआ बेटा? ये आप लोगों को भी पता है, 26. द डिफरेंस इज 26,873 से our answer goes down. And I want answer yes 5%. मतलब I want answer कितना चाहिए था? 14,371 से डाउन. तो 14,371 से डाउन करना होगा तो इट्स अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो व्हाट इज द आंसर? 14,371 into 5 divided by 26,873. So answer in percentage, you will get up to 2 digits. ओके, क्यों आंसर ये आया बेटा? इंटू 5 करना. सिंपल है. 14,375 इंटू 5 डिवाइड बाय, तो इज इक्वल टू करना रहेगा. सॉरी, हाँ जी, 2.67 आई एम गेटिंग द आंसर. डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें बढ़ाना पड़ेगा. ओके, एंड ये हमें बढ़ाना पड़ेगा. सो फाइनल आंसर वी आर गेटिंग 10 12.67. 12.67. Okay, so final answer is 12.67. That is the IRR. Yes, recalled beta, पूरा problem. Okay, you recalled it. कैलसी पे हमने किया था. So 12.67 we are getting the answer. The same problem we have done it on the Excel. हाँ जी, हाँ जी. चलो अभी yes, you can see परसों मैंने गलती किया. हाँ जी, when you are following 0 year में how much you have invested? 2 lakhs. करेक्ट है?
2 lakhs. And in the first year, now but Excel has some shortcuts in real life. So first year में how much you received? 50,000, correct है? So similarly you are getting it. अभी ये देखो Excel में कुछ functions होते हैं. If you drag this, you will get up to 5 years अपने आप. Otherwise you have to type it, and here I will copy paste it 50-50, but in the last year it is 90,000, correct है? हाँ. So what is the Excel formula? IRR directly is equal to IRR. You can use this formula IRR, and then this is, yes, ये हमने उस दिन भी किया था. And if I close the bracket, I will get directly 13%. और इसको मैं थोड़ा सा 2 digits बढ़ा देता हूं. So I am getting the exact answer 12.54%. See, when we are using trial and error method, it is 12.67. But if you are using exact IRR का table, so IRR table exactly, so 12.54, even if you can go by at least 5-7 digits here, yes, you can see digits भी हम लोग बढ़ा सकते हैं. It's a 5421. Okay, 5420, 5421. If I use the discounting factor over here, you can see I will change here the discounting factor. I will do it 12.5420956. And if I multiply here by 1.125420956, and if you see the answer, yes, I am getting the same answer, exact rate. You can see here, if I take 12.5420956 in Calci, you can take on Calci 1 divided by 1.1254. You are getting exact 2 lakh 1 rupee, 1 rupee ka difference. So actual rate is 12.54. It's an accurate rate. Okay. Excel will give you the accurate rate. But, yes, our trial and error method will give you slightly different rate. Okay. 12.67. It's okay, beta. 12.67. Suppose if bank is giving you 8%, it's better to invest in the lease agreement. Okay. Lease is giving you the 12.67%. So normally you compare it with the bank rate. आप किसके साथ इसको compare करते हो? With the bank rate. Yes. Have you got the concept, beta? Excel will save your time. But in real life, okay, in exam, this method is not allowed because Excel is not allowed to use. But Excel gives you accurate answer. Excel में आपको accurate answer मिलेगा. उस दिन क्या हुआ था? उस दिन बेटा मेरे से मैं Ctrl+1 करके हम लोग नंबर ले रहे थे उस दिन. तो नंबर के वजह से क्या हुआ था? उस दिन हमारा आंसर 0 बता रहा था. आंसर हमारा 0 आ रहा था. 0. तो ये क्यों आ रहा था? बिकॉज हमने उसको परसेंटेज नहीं लिया था. इफ यू टेक परसेंटेज यू वोंट गेट द आंसर, रॉन्ग आंसर. ये देखो परसेंटेज में यू विल गेट द करेक्ट आंसर, एक्यूरेट आंसर. यस. ओके. When we'll learn Excel like you, बेटा, it will take time ना. मेरे 20 साल हो गए ये प्रोफेशन में, तो मैं तो एक्सेल अच्छा ही चलाऊंगा ना बेटा. अभी मुझे वो आदत है. इफ आई शो यू द आंसर, मैं टाइप भी उतना ही फास्ट कर लूंगा. बट इज बेटर कि मैं अभी नॉर्मली आई राइट इट ऑन दी है, पर मैं टाइप भी कर सकता हूँ आपके स्पीड के साथ ही. नंबर से परसेंटेज में चेंज नहीं किया था. यस माधव, वो गलती हो गया था हमारा. यस. नाउ एक्सेल मैजिक. यस, एक्सेल का मैजिक है ये. डायरेक्टली विल गेट द आंसर, बट इन एग्जाम इज मैंडेटरी. कौन सा एरर में? ओके. 45 ईयर्स कैसे हो गया बेटा एज? एक्सेल में 10-12 स्टैंडर्ड से यूज कर रहा हूँ. आई ज्वाइंड माई ऑफिस बिकॉज घर पे बैठना नहीं था. 12th के बाद मैंने तुरंत ऑफिस ज्वाइन किया था.
Excel taught in IT course. Very good. चलो आगे बढ़ना है. चलो आंसर में आ जाओ भाई. एक्सेल को बस करो अभी यूज. मजा आ गया बेटा आपको. आ जाओ एस 19 में. यस वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टू क्वेश्चंस. आज भी एस 26 नहीं हो पाएगा. यस बेटा आई नो सुरेंद्रन जी. यस we'll solve that question as 26 but today we'll finish with this as first. आज हमें एस कंप्लीट करना है एंड टुमारो देखते हैं फिर. आई विल टेक एक्स्ट्रा सेशन डोंट वरी. बेटा आई रिक्वेस्टेड आईसीआई के नेक्स्ट मंथ में आई विल कवर यूर लाइबिलिटी बेस्ड स्टैंडर्ड्स. फर्स्ट आई विल हैव यू विल हैव ग्रिप ओवर दिस स्टैंडर्ड्स. चलो आंसर्स देख लो बेटा. इलस्ट्रेशन नंबर 3. चलो सॉल्व इलस्ट्रेशन 3. ट्रायल एंड एरर मेथड इजी था. एक ही मिनट. बेटा I will show you the answer. Don't worry, beta. Now you have to correlate these cases. बैठ जाता हूँ थोड़ा अभी थक गया हूँ आज में. रिलैक्स बेटा रिलैक्स लावण्या जी. बेटा you will understand Excel in your article sheet and I will show you the answer. Yes बेटा don't worry. चलो illustration 3. A sold WDV of 40 lakhs था. Machine having WDV of 40 lakhs and 50 lakhs is selling price. 50 lakhs क्या है उसकी सेलिंग प्राइस है. ओके सर 50 lakhs उसकी सेलिंग प्राइस है एंड 40 lakhs क्या है बेटा उसका WDV. द सेम मशीन was leased back by B2A. by B2A. ठीक है. तो ऑपरेटिंग लीज का क्वेश्चन है ये. यस ऑपरेटिंग लीज. नाउ सी बेटा डायग्राम निकालो. बुक वैल्यू 40 एंड सेलिंग प्राइस ऊपर आएगा. टाइमलाइन डायग्राम 50 and selling price is equal to fair value. So this is case 1. Write down over there. Case 1. Case 1 and you are in profit. What is the profit? 10 lakhs. And this profit you will record immediately. So see the answer. Answer कही है रे.
illustration 3 का आंसर profit. हाँ, see, this is how you will present the answer. Serial number, cost, selling price, fair value, profit of 10 lakhs, treatment recognize immediately. करेक्ट है? ठीक है. केस 2. सी नाउ दिस इज यस. केस 1 का क्वेश्चन था ये. बुक वैल्यू, सेलिंग प्राइस इज 50 and fair value 60. So selling price is less than fair value. Case 2. This is case 2. Case 2. And here also this difference 10 lakhs immediately record. 10 lakh profit immediately profit है. 10 lakhs immediately record. Okay, so this is case 2 question. See, profit of 10 lakhs recognize immediately. So second answer over. Third का diagram. You can draw this diagram, so it will be easy for you. Book value 40, selling price 38, and fair value is 45. So now book value से कम है, तो loss. ओके, तो लॉस का क्या बताया था मैंने? केस 2 एक्सेप्शन. Losses you have to write it in like exception. Loss should not recognize immediately, or loss should be recognized immediately, but your future rent payment should not compensate by lower amount. Okay, तो ये देखो, ये लाइन लिखना है. Loss recognize immediately 2 lakhs rupees, 2 lakhs. Okay, but assume loss is not compensated by future payment. ये लाइन लिखा तो 1 मार्क मिलेगा. 1 mark. 1 mark for this line. Okay, loss is not compensated by future payment. This is case number 2 exception. D. Fair value 40. Okay, so book value is equal to fair value 40, and your selling price is 50. Selling price is more than fair value. Case 3. Case 3. So book value and fair value, zero difference. Zero difference between book value and fair value. Zero difference. Book value and fair value. But fair value and selling price, rupees 10 lakhs. Amortize, defer. हाँ, प्रॉफिट amortize. Amortize मतलब defer. Divide करो. Amortize means defer. 50 and 40, 10 lakhs profit. Amortize. Amortize मतलब divide करो. समझा बेटा? एकदम इजी है. एकदम इजी है. सो 10 lakhs को amortize करो. ठीक छे? अरे से yes or no? हाँ, 10 lakhs को amortize करो. ओके, सो दिस इज केस नंबर 3. इसका डायग्राम इधर बनाता हूं, इसका डायग्राम इधर बनाऊंगा. चलो डायग्राम. ई. अरे रुको 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 रुको.
चलो ई केस बुक वैल्यू 40, book value 40, fair value 46, selling price 50, rupees 6 lakhs immediately. Case 3, again case 3, and 46 this profit immediately, and this profit is deferred, rupees 4 lakhs. Diagram will save your time and understanding will also improve. है कि नहीं? डायग्राम टेक्निक इजी छे? हाँ जी. And last diagram, book value 40, fair value 35, selling price 39. Now book value and 35 loss immediately. Book value and fair value. And 35 and 39 for profit amortize. Amortize. हर डायग्राम easily समझ में आया. See the answer part. All last are case 3. 0, 10 amortize, 4 amortize, 6 immediately, 6 immediately, 4 amortize. And last में 4 amortize and 5 loss immediately. Understood or not? बताओ रे, जल्दी बताओ. Easy था? डायग्राम इजी कर दी है ना? सो अंडरस्टूड मेरा और आपका थिंकिंग? यस, माय थिंकिंग एंड योर थिंकिंग बेटा. हाँ, एंड प्रेजेंटेशन यूज दिस फॉर्मेट इन एग्जाम फॉर प्रेजेंटेशन. ये बढ़िया फॉर्मेट है, ये बढ़िया फॉर्मेट है. बेटा इज ऑलवेज इन द बुक्स ऑफ सेलर. इट इज ऑलवेज इन द बुक्स ऑफ सेलर. सर इनकम टैक्स, बेटा इनकम टैक्स का बोलने बेटा तो इट विल टेक टाइम. तो इनकम टैक्स फैकल्टी विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू कैलकुलेट in case of lease. Okay, so expert faculty will explain you. I am expert of accounts, so tax expert will explain you about this. ठीक है? यस बेटा, डायग्राम्स देख लीजिए. इलस्ट्रेशन 3 के डायग्राम्स. Now TYK 14 you can do by your own. Okay? हाँ जी, इसका होमवर्क हम लोग कल चेक करेंगे. TYK 14 you can do by your own. Now come to example 5. Now this is last ये treatment है. Example 5 you can write over there, page number 5.161. Example 5, page 5.161. This is a new concept, beta. Please understand. Now this is the last concept for AS 19.
how operating leases recorded. ठीक है? हाँ, profit will be compared between selling price and book value. And if suppose fair value comes in between, then beta case number 3. If say fair value is greater than selling price, case number 2, and equal to fair value and selling price are equal, case 1. Case 1 easy, case 2 easy, case 3 thoda sa difficult. That book value and fair value immediately recorded, and fair value and selling price deferred. It's very simple. चलो आगे बढ़ना है बेटा. Last example 5. Yes, beta, I will explain you. Rohit Mai, I will explain you. Suppose output from machine is taken on 3 years operating lease, underline operating lease, and are estimated 10,000 units in year 1. See, example 5. I will explain you. Year 1, 2, 3. 3 years. Now what is output? Output 10,000 units, 20,000 units, and 50,000 units. What rent you have paid? Rent 25,000 is given. Output दिया है. And rent is 25,000 you paid, 45,000 you paid, and 50,000 you paid. So units बेटा कितने हैं? Units are 10, 20, 50, 80,000 units. And what is rent? 1,20,000. Rent. This is rent paid. What is rent expenditure? Rent expenditure is also 1,20,000, but it should be in the ratio of 1:2:5. क्या ratio होना चाहिए? 1:2:5. 15,000, 30,000, 75,000. This rent expenses transferred to P&L. So what is? Yes, your prepaid, or in bracket it will be payable. This is column A, B, C, D, and is equal to C minus D. So your rent paid is 25,000 and your expenditure is in the ratio of output is only 15,000. So you paid extra. आपने extra pay किया. How much you paid? 10,000. This is prepaid. Prepaid means asset, debit balance. Prepaid is asset. Direct interest students. Prepaid means we paid extra, and we paid extra is our asset. Okay, we paid less, so it's a payable, it's a liability. Okay. Now rent paid is 45,000 and expenditure is only 30,000. So you again paid extra. 15,000 prepaid debit. And you paid 50,000, but expenditure is 75,000. Now 25,000 prepaid cancelled. जो हमने ऊपर 10 और 15 पे किया था ना एक्स्ट्रा, first we will cancel that. So it is a credit. So in first year, we paid 10,000 extra. In second year, we paid 15,000 extra. And in third year, we adjusted what we paid extra. Adjusted. Okay. Prepaid cancel करेंगे. Adjust करेंगे. So this is the concept of example 5. Now how to pass entries?
हाउ टू पास एंट्रीज, इज सिंपल बेटा, ये सिंपल था। यस सिंपल था ये। व्हाट आर द एंट्रीज, सी द एंट्रीज, सी वी पेड कैश, कैश कितना पे किया, वी पेड 25,000, we paid 25,000, so cash is 25,000. And what is your kharcha, kharcha is only 15,000, so lease rent debit 15,000. So what is prepaid, prepaid, so in prepaid ko ICAI recorded it as lease, yes, equalization. Lease equalization is nothing but it's a prepaid. You can write prepaid lease. If you don't want to write prepaid lease, you can write lease equalization. What do you write? Lease equalization. Okay, lease equalization is 10,000. और P&L में कितना जाएगा, P&L में 15,000. You will transfer only 15,000. This is first year entry. If you want to pass second year entries, beta, I have given here. सेकंड ईयर के एंट्रीज आई हैव टेकन, हाँ जी, ये देखो सेकंड ईयर में क्या है, लीज रेंट 30,000, प्रीपेड 15,000 टू लेसोर, लेसोर इज अवर क्रेडिटर, पैसा देना है ना उसको, एंड जब पेमेंट करेंगे तो रिसीवर टू बैंक, एंड P&L टू लीज ओनली 30,000, यस, एंड लास्ट में लीज रेंट 75,000 P&L वाला, ओके। टू लीज इक्विलाइजेशन, प्रीपेड कैंसल्ड, क्रेडिट किया, डेबिट नहीं है ये, कैंसल्ड टू, एंड टू लेसोर क्रेडिटर ओनली 50,000, और P&L में हम लोग पूरा 75,000 डाल देंगे। सो दीज आर दी एंट्रीज, टेबल दिया हुआ है। एंड सेम प्रॉब्लम यू सॉल्व फॉर इन द बुक्स ऑफ लेसी, लेसोर उल्टा हो जाएगा, लेसोर के बुक्स में उल्टा, रिसीव्ड इन एडवांस, सो प्रीपेड होगा तो उसके लिए रिसीव्ड इन एडवांस होगा, सो सेम प्रॉब्लम यू विल राइट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, एग्जाम्पल 5, टेक अ स्क्रीनशॉट, नहीं तो लास्ट में लीजिए स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट, हैव आई एक्सप्लेन यू इलू 1, इलू 1 हुआ था क्या हमारा, so example 5, 6 we have completed, yes, we have completed example 5, yes, last part, एग्जाम्पल 5 का, हाँ बेटा पेबल होगा यदि ग्रेटर होगा तो, यस। सी बेटा एग्जाम्पल 5 का लॉजिक यही था कि यू शुड ट्रांसफर इन P&L इन द रेशियो ऑफ आउटपुट, यू शुड नॉट ट्रांसफर व्हाट पेमेंट यू हैव मेड, इट शुड बी ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ आउटपुट। हमें करना क्या है, आउटपुट के रेशियो में 1,20,000 लेना है, वॉट एवर पेमेंट यू आर डूइंग इट शुड बी इन द रेशियो ऑफ आउटपुट, ओके, डोंट यूज डायरेक्टली, yes, now it's a choice of management, okay, whether they want in the ratio of output or whether they want in the ratio of in the ratio of whatever paid, okay, so paid के ratio में लिया, if output is not important for you, you can directly take in the ratio of paid, ये logic है। illustration 1 completed, example also complete, exams you can try by your own, I'm asking you about illustration 1 beta, ilu 1, so now we are left with only ilu 2,
चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा. So we have solved all illustrations. Elude 2. Tomorrow, beta, I will first take before starting impairment. Before starting impairment, beta, I will take TYK answers. And after TYK answers, beta, we have finished with all, illustration part. So tomorrow's homework, first finish your illustration 2. I will show you today theory also. Theory bhi kar lenge. Yes. So last illustration of the day. I hope you enjoyed today's session. This is very easy for you. Today we will quickly revise all concepts in detail. तो मुझे लगता है कि आज का सेशन आपके लिए इजी था. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. ठीक है. एंड आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स आर टेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट लेक्चर करके. इट्स वेरी सिंपल. चलिए, इलस्ट्रेशन 2. प्रकाश लिमिटेड leased a machine to Badal Limited on the following terms. Fair value of the machine. Fair value of the machine. Beta, fair value of the machine we compare. We compare with present value of machine. Normally comparison के लिए होता है. Lease term 5 years. Okay. So every year you are getting lease rental 8 lakhs. So 8 lakhs into 5 years. So gross investment. What is called as gross investment? Gross investment means what you earn. 8 into 5 years. 40 lakhs we are going to earn. Guaranteed residual value. GRV. And expected residual value. Now expected means GRV is 1.6. So UGRV is 1.4. Out of 3, 1.6 is GRV. So but obvious, 1.2 or 1.4 is UGRV. IRR is given in the question, 15%. So we will take that. IRR ka discount rates. Now institute has given you these rates. You can cross tally it. Cross tally 1 divided by 1.15. You can take on calci. 1 divided by 1.15 is equal to 8696. Yes, it's correct. Wapas is equal to, yes, 0.7561. It's correct. Wapas is equal to 6575. It's correct. Wapas is equal to 0.5718. It's correct. And वापस is equal to 0.4971 है. 717 means 4972. It's also correct. So institute has given you all discounting factors. So don't consider discounting factor. If given in the institute question, then beta we will consider that. Don't calculate it. Ascertain unearned finance income. आपको क्या calculate करना है? Unearned finance income. Now what is finance income? Income is for whom? Lessor. और लेसॉर है तो कंसीडर. इनकम है तो लेसॉर है. एक्सपेंडिचर होता तो लेसी. ओके. कंसीडर UGRV also is 1.4. So how much he is getting beta? Lessor ka gross investment is 40 plus 3. So gross investment is 43 lakhs. 43 lakhs. Fair value is of no use to confuse us. Now, unearned finance income means interest. Is in simple language, it is interest. And what is interest? Gross investment. Interest is total amount you are paying minus present value of investment. Now, present value of investment means net investment. Quarterly debt, net investment. Present value means net investment.
This is working note 1. What is gross investment you calculated? Rentals plus GRV plus UGRV. Rentals plus GRV plus UGRV and minus present value of investment. How we are going to calculate it? 43 और ये calculate कैसे करेंगे sir? तो calculation present value year. Should I show it on calci beta? Yes. Year 1, 2. So you can use calci shortcuts. 1-5 cash flows. So 1-5. Yes, calci shortcut is there. So you are getting every year 8 lakhs, 1-5. So annuity. And in 5th year, you are getting 3 lakhs. What you are getting? 3 lakhs. GRV plus UGRV. GRV plus UGRV. What is discounting factor? For 5 years, you can take on beta calci all 5 digits. Total lenge 0.8696 plus 0.7561 plus 6575 plus 5718 and 4972. 3.3522. 3.3522. And in the last year, 4972. So discounted cash flows. Eight into 3.3522, 26.82 up to 2 digits, 1.49, 28.31, 28.31 minus gross investment, 14.69 is the income. Check the answer. Yes, 14.69 is the correct answer. Check it. Have query? You can ask me. If any query, you can ask me. Can you take whole accounts beta as per institute requirement? Jagat is saying, sir, today I don't even get bored even 1% because of mathematical calculation. Very good, beta. This question is already done. Okay, Gaurav, very good. Sir, unearned finance income in this question can also be calculated by gross investment minus fair value. No, not at all. It's a present value. Fair value is of no use because fair value is 28.3 and it is 28.31. So you can take it separately or you can use shortcut of that. How I explained it. Yeah, you can do it like institute. So this will save your time if you have annuity. Annuity hoga to annuity factor lena hai. Surendran is saying, sir, already understood in the last session. Okay, beta, very good. So nice of you. ये तो basic maths है. Direct entry students, please do this mathematical calculation. Don't worry. This is annuity you are getting. Annuity होगा मतलब हर साल मिलेगा तो हमें डिस्काउंटिंग को ऐड करना है. What is the logic behind it? See, instead of देखो ICAI ने क्या किया है? ICAI ने 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख तो मैंने क्या किया 8 लाख लेने के बदले में इसको कॉमन निकाला और कॉमन निकाल के इसकी टोटल ली. So one and the same thing ना 8 लाख को कॉमन निकालो. Then we will take a total. So instead of that we take total of this 5 and multiplied by 8 lakhs. तो इसको क्या बोलते हैं in FM language? It is present value annuity factor. क्या बोलते हैं इसको? Present value annuity factor. So institute के बेस से जाओ या मेरे बेस से जाओ, दोनों भी सेम ही है. मेरा भी टाइम बचाएगा. सर इलस्ट्रेशन अभी इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो बेटा फटाफट. स्क्रीनशॉट टाइम 400 पेजेस बुक. पहले 400 पेजेस बुक.
चार्ट भी लिखना है 100 पेजेस के बुक में, यू कैन राइट दैट चार्ट. चलो, दिस इज एग्जाम्पल 1 to 7 seconds आई एम गिविंग यू. 400 पेजेस बुक. इंडेक्स बोले तो 400 पेजेस बुक. यस माय डियर. थैंक यू सेंथा मिलर सी. सेंथा मिलर सी. अरे बेटा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस योर नेम्स. साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, प्लीज forgive me if I'm taking any wrong names. No, beta Anmol, please watch the previous session. Yes. And Ilu 3 is sale and lease back. एक second. Sale and lease back. Category A. चलो, screenshot time. Example 1 का screenshot time. IRR 12.67%. अरे वाह रे वाह मेरे शेयर लोग. Example 2 191,400. Yes sir. Sohail Sheikh, you are good teacher, properly understand in Hindi, but other faculties are not explaining in Hindi. बेटा actually don't blame any faculty. आप किसी faculty को blame मत कीजिए. क्या होता है, इंस्टीट्यूट का टाइम लिमिट है बेटा. हम लोग टू दी पॉइंट रहते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते. सो ये सबसे बड़ी दिक्कत है बेटा. जब हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करेंगे. एग्जाम्पल 3, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और सुनते रहिए. तो यही दिक्कत होता है बेटा. फिर हम लोगों को दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा सभी फैकल्टीज को डिफिकल्ट होता है. और स्क्रीन इसीलिए तो मैं स्क्रीनशॉट का टेक्निक लेके आया इंस्टेड ऑफ गिविंग यू आंसर इन राइटिंग. तो ये 100 पेजेस बुक, 400 पेजेस बुक इज वेरी न्यू फॉर यू. वेरी गुड शिवानी. शिवानी सिंह की मैं डायरेक्ट एंट्री से हूँ और आई अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल. वेरी गुड बेटा. बिकॉज ऑफ यू. थैंक यू बेटा. फॉर एग्जाम्पल इसमें भी गेस रेट निकालना था. फॉर एग्जाम्पल में भी ठीक है. इसमें भी एंट्रीज करनी थी. इसमें इंटरेस्ट रेट देखो. आई थिंक 11%. इंटरेस्ट रेट 11%. ऊपर निकाला ना. हाँ, 11%. और कुछ किसी को दिक्कत होंगी तो यू कैन टेल मी. और कुछ गुफ्तगू करनी है आपको तो बेटा आप मेरे से बात कर सकते हो. तब तक स्क्रीनशॉट्स लेते लेते. ये हो गया. हाँ जी. 5 नंबर. फीडबैक्स देते रहो बेटा. फीडबैक्स देते रहो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. journal entry is also given beta by me. इलू 1. आज बहुत जल्दी टाइम गया रे.
गारंटेड गुंजन, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू का मीनिंग क्या होता है बेटा? कि हम लोग लेसी जो है ना, उसको वादा करता है, तो वादा किया तो निभाना पड़ेगा बेटा। जीआरबी मतलब गारंटी देता है कि भाई यदि ये लीज पीरियड के बाद मैं ये मशीन इतने में ले लूंगा, तो लेसी ने वादा किया तो लेसी कंसिडर करेगा उसको। एंड यूजीआरबी का वादा ही नहीं है, तो यूजीआरबी वो नहीं कंसिडर करेगा लेसी। पर यूजीआरबी किसी और के साथ वादा निभाया जाएगा। लेसोर जो है उसको कोई और वादा करता है, लेसी नहीं वादा करता है। पर उसको तो मिलने से, पैसा मिलने से मतलब है, तो पैसा उसको मिलेगा, तो बेटा वो यूजीआरबी को कंसिडर करेगा। और यहाँ पे हमारा पूरा टॉपिक, एक सेकंड, तीन वाला वापस ले लो, हाँ। और यहाँ पे पूरा टॉपिक खत्म होता है। कल हम लोग सॉल्व करेंगे टीवाई के क्वेश्चंस। और S26 थोड़ा बहुत बाकी, अरे 400 पेजेस तो हो गए। 100 पेजेस बेटा, वेट 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 वेट, हाँ जी। एक से मिनिमम लीज पेमेंट एंड इकोनॉमिक लाइफ, बहुत सारा लिखना है आज, बहुत ही लिखना है। थैंक यू गुरप्रीत जी। I am also direct entry student and I understand whatever you have taught. Very good बेटा। डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट है कोप अप करना, बट यस, हैट्स ऑफ टू यू। वॉच दिस लेक्चर अगेन एंड अगेन, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते रहो, 100 पेजेस की बुक मेंटेन करते रहो। दिस इज ओनली की फॉर योर सक्सेस, डोंट वरी, यू आर गोइंग टू पास। वन स्टूडेंट आउट ऑफ हिमाचल, वन इज डिम्पल भी एक थी, डिम्पल ही थी शायद से, तो वो थी पंजाब की कुड़ी, डायरेक्ट एंट्री वाले, एक दो बैच पहले दे हैव टेकन एडमिशन, तो पर्सनली मैं उनको जानता था इन पिंपरी चिंचवड। तो वो भी बेटा फर्स्ट एग्जाम में पास हो गए, कॉस्टिंग में तो एक को 70-80 मार्क आए थे। सो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स डोंट वरी। एक हमारा ही बंदा था पार्थ शाह, आप लोग कभी भी मेरे इस पे जाके इंटरव्यू देखो, हाउ यू हाउ ही स्टडीड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया पढ़ाई करता था। यस, चलो हो गया, लास्ट लास्ट टू हो गया, ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड एंड एंड, खत्म है। एंड सेल एंड लीज बैक, नीलेश थोरात जी एंड संकेत सर का ट्रांजैक्शन, और ये थी कुछ केसेस। ठीक है, कल मिलेंगे सुबह। डोंट वरी, कल का सेशन और रॉकिंग सेशन होगा, और कल मजे करेंगे बेटा, कल के सेशन में वापस मिलते हैं। चलो देन, गुड नाइट, टेक केयर, पढ़ते रहो, लिखते रहो। S10, S19 100 पेजेस एंड 400 पेजेस बुक मिस करना बेटा रात भर। चलिए बाय।